Today, we're going to follow this one incredible thread. This thread of ambition. And believe me, it's a long one. It stretches back thousands of years, and it reaches out millions of miles into space. So, let's see where it takes us, shall we? Okay, so here's a question for you. What in the world connects ancient Egypt, modern-day entrepreneurs, and the South Pole of the Moon? I know, it sounds like the start of a really weird joke, right? But the answer is actually this incredible story. A story about exploration and this just relentless human drive to always reach a little bit further. And our story? It kicks off 2,000 years ago. All right, let's dive in. We're going back 2 millennia to find some rock-solid proof of just how connected ancient India was to the rest of the world. And this proof, it was found in a place you would never, ever expect. 30. Just remember that number. 30. That's how many ancient inscriptions have been dug up in, get this, Egypt. And we're not talking about just some random scratches in a rock here. No way. These are tiny pieces of a forgotten history, clues that point to this massive, bustling trade network that literally connected continents. And when you dig into the details, it gets even cooler. These inscriptions? They were found in Egypt's legendary Valley of the Kings. We're talking about the 1st to 3rd centuries CE. And the script they're written in is called Tamil Brahmi. But here's the really interesting part. One name just keeps popping up over and over again. Kaikai Koren. So you're probably asking, what exactly is Tamil Brahmi? Well, it's basically an ancient script used to write the Tamil language. And finding it so far from South India, that's a huge deal. It's monumental. Because this isn't just about people trading goods. This is proof of a literate, seafaring culture. These were people who could read, write, and communicate across absolutely enormous distances. So what's the big takeaway here? You've got to understand, these little fragments are basically historical dynamite. I mean, they directly connect to the Chera dynasty. They back up ancient texts like the Sangam Corpus with actual physical proof. And they give us undeniable evidence of those legendary Indo-Roman trade routes we've heard so much about. This just adds to what we already knew, and it paints this super clear picture of just how connected the world was, even back then. Okay, let's jump forward in time. A lot of time. 2,000 years, to be exact. Now, that same spirit, that same ambitious drive that once looked out across the oceans, well, today, it's turned inward. The focus now is on building strength from the inside out by empowering a whole new generation. And one of the ways this is happening is through something called the Swavalamani Scheme. The name itself means self-reliance, which is perfect, and it's a really smart 3-step journey. First, you've got awareness programs, just to get people interested. Then, you move into development programs, where they build real, concrete business skills. And finally, and this is key, they get long-term mentorship and support. It's basically a complete A to Z pipeline for creating new entrepreneurs. And this isn't just one group doing all the work. It's a massive team effort. You have the Ministry of Skill Development, and they're kind of setting the big picture vision. Then you've got these specialized institutes that handle all the actual hands-on training. And finally, the government's own think tank, Niti Aayog, comes in with that really critical support. We're talking mentorship, seed funding, the whole deal. So what's the end game here? It's really about a fundamental shift in how we think. The goal isn't just to help, say, 1,200 female students get a job. Not at all. It's to transform them into the next generation of job creators. And that's a world of difference, right? It's the difference between looking for a job and actually creating jobs for other people. Okay, so we've gone from building this strong economic foundation at home, and now that same thread of ambition is pulling us somewhere else entirely. It's pulling us toward the final frontier, to space. We are, quite literally, reaching for the moon. And the target? It's a very specific mountain called Mons Mouton. Picture this, it's a peak right near the moon's south pole, sitting on the edge of the South Pole Aitken Basin. And that basin is the single largest and oldest impact crater on the entire moon. So this place is special. So why all the fuss about this one mountain? Well, Mons Mouton it's like lunar real estate gold. It gives you the best of both worlds. On one hand, the peaks are almost always in sunlight, which is perfect for generating solar power. But then, right next door, you've got these deep craters that are in permanent shadow. And because they're so cold, they're perfect places to find water ice. It's just a strategically brilliant spot. I mean, think about it. This one spot has everything you could possibly want. For the scientists, they get access to super ancient material from deep inside the moon's crust. Plus, they can study that all-important water ice.
For the engineers, they get a steady, reliable source of solar power and a nice, clear line of sight to talk directly to us back on Earth. It literally ticks every single box. So what's the mission for this prime piece of lunar real estate? It's called Chandrayaan-4. And this isn't just about landing and waving a flag. Oh no. This is a sample return mission. The whole point is to go there, collect some of that unique lunar material, and bring it all the way back home to Earth so we can study it up close. So, let's just take a step back for a second. We've gone from ancient history to modern-day empowerment, all the way to the future of space exploration. Now, it's time to pull that single thread we started with and tie it all together. It started with the ambition to cross vast oceans, right? To build trade routes, to connect different worlds. And in the process, they left behind little clues for us to find, 2,000 years later. Then, that very same ambition turned inward. It started focusing on empowering people right at home, on building a nation of creators and innovators, literally from the ground up. And today, that same fundamental drive, that same human ambition is pointed up at the stars. It's charting brand new paths along these cosmic highways all the way to our closest neighbor in space. So think about it. We went from ancient pottery pieces in Egypt to modern entrepreneurs building an entire nation to robots exploring the surface of the moon. The scale of this ambition just keeps getting bigger and bigger, which leaves us with one final and really exciting question: where on Earth, or off it, will that ambition take us next? नमस्कार, करंट अफेयर्स की इस रोमांचक दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी नॉलेज को चैलेंज करेंगे फरवरी 2026 के कुछ जोरदार सवालों के साथ। तो तैयार हो जाइए, देखते हैं आपका स्कोर क्या रहता है। और हाँ, ये सारे सवाल हमने लिए हैं यूपीएससी क्रक्स के 16 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स क्विज से। तो चलिए, क्रेडिबिलिटी की कोई चिंता नहीं। तो क्या आप चैलेंज के लिए तैयार हैं? रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। 5 सवाल, हर सवाल के 4 ऑप्शंस और आपको सही जवाब सोचने के लिए मिलेंगे ठीक 5 सेकंड। लेट्स बिगिन। राउंड नंबर 1, टू द मून। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, चंद्रयान 4 मिशन के लिए प्रस्तावित लैंडिंग साइट मॉन्स म्यूटन का, जो चंद्रमा के साउथ पोल के पास है, मुख्य वैज्ञानिक महत्व क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, ये चांद पर ऐसी अकेली जगह है जहां सांस लेने लायक एटमॉस्फेयर है। ऑप्शन बी, यहाँ से गहरी क्रस्ट का मटेरियल मिलता है और हमेशा अंधेरे में रहने वाले क्रेटर्स तक पहुंच मिलती है जहां पानी की बर्फ है। ऑप्शन सी, ये एक बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी है जिसे जियोथर्मल एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन डी, ये चांद के उस हिस्से में है जो धरती से कभी दिखता ही नहीं। सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी। जिन्होंने ये सेलेक्ट किया, क्या जबरदस्त शुरुआत है। तो ऑप्शन बी सही क्यों है? देखिए, मॉन्स म्यूटन साउथ पोल एटकिन बेसिन के बिल्कुल पास है। इसकी वजह से वैज्ञानिकों को चांद की गहरी सतह का मटेरियल मिल सकता है, हमेशा अंधेरे में रहने वाले क्रेटर से पानी की बर्फ निकाली जा सकती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ सोलर एनर्जी के लिए बहुत लंबे समय तक सूरज की रोशनी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं राउंड 2 पर, स्कीम्स एंड सोसाइटी। अगला सवाल है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में महिला स्टूडेंट्स के बीच एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने वाली स्वावलंबिनी स्कीम को किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और डी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन सा मंत्रालय है? दिमाग लगाइए। समय समाप्त, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, स्वावलंबिनी स्कीम, जो एक विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, उसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने शुरू किया है। इसका मकसद देश भर की 1200 महिला स्टूडेंट्स को उद्यमी बनाने के लिए इंस्पायर करना है। अब बारी है राउंड 3 की, एकोज ऑफ हिस्ट्री। ये एक रैपिड फायर राउंड होगा, तो तैयार हो जाइए। सवाल है, हाल ही में इजिप्ट में 1st से 3rd सेंचुरी के 30 तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जो प्राचीन ट्रेड लिंक्स का सबूत हैं। ये इंस्क्रिप्शंस इजिप्ट में किस खास जगह पर पाए गए? आपके ऑप्शंस हैं, ए द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, बी वैली ऑफ द किंग्स, जिसे थीबन नेक्रोपोलिस भी कहते हैं, सी द लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, या डी द स्फिंक्स ऑफ मेम्फिस। जल्दी सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है बी, वैली ऑफ द किंग्स। ये खोज कमाल की है, हमारे इतिहास से एक डायरेक्ट कनेक्शन। ये 30 तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग्स यानी थीबन नेक्रोपोलिस में मिले हैं।
ये इस बात का एक और पक्का सबूत है कि प्राचीन भारत और रोम के बीच ट्रेड कितना स्ट्रांग था। हिस्ट्री राउंड का दूसरा सवाल, बिल्कुल तेजी से। सवाल है, इजिप्ट में मिले इन तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस में एक नाम बार बार आता है, सिकाई कोरन। ये नाम किस प्राचीन भारतीय डायनेस्टी से जुड़ा है? और आपके ऑप्शंस: ए, द चोला डायनेस्टी, बी, द मौर्य डायनेस्टी, सी, द चेरा डायनेस्टी, या फिर डी, द गुप्ता डायनेस्टी। क्या लगता है आपको? और सही जवाब है सी, द चेरा डायनेस्टी। बहुत खूब। अगर आपने इसका भी जवाब दे दिया तो आपकी हिस्ट्री नॉलेज कमाल की है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि सीकाई कोरान नाम जो इन इंस्क्रिप्शंस में मिला वो सीधा प्राचीन चेरा डायनेस्टी और संगम लिटरेचर से जुड़ता है। सोचिए, हजारों साल पुराना इतिहास आज भी नए राज खोल रहा है। अमेजिंग। और अब आ गए हैं हम अपने आखिरी राउंड पर, द फाइनल राउंड, द रिटर्न। हम वापस चांद पर जा रहे हैं इस आखिरी सवाल के साथ। सवाल है, चंद्रयान 4 मिशन जिसे माउंट्स मॉन्टन पर लैंड करने के लिए प्रपोज किया गया है, उसे खास तौर पर किस टाइप का स्पेस मिशन डिजाइन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं: ए, अ क्रूड लूनर लैंडिंग मिशन, यानी इंसानों को चांद पर उतारने वाला मिशन; बी, अ लूनर कम्युनिकेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन; सी, अ वन-वे रोबोटिक रोवर मिशन; या फिर डी, अ सैंपल रिटर्न मिशन। ये आपका स्कोर डिसाइड करेगा। और इस चैलेंज का आखिरी और बिल्कुल सही जवाब है डी, अ सैंपल रिटर्न मिशन। जी हाँ, बिल्कुल सही। इंडिया का अगला चंद्रयान 4 मिशन एक सैंपल रिटर्न मिशन होने वाला है। इसका मुख्य उद्देश्य चांद से मिट्टी और पत्थर के सैंपल्स को रिसर्च के लिए धरती पर वापस लाना है। और इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स चैलेंज यही खत्म होता है। तो कैसा रहा आपका स्कोर? 5 में से कितने जवाब सही दिए आपने? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। प्राचीन व्यापार के सबूतों से लेकर चांद की मिट्टी लाने की तैयारी तक, हमारा इतिहास और भविष्य दोनों ही रहस्यों से भरे पड़े हैं। सवाल तो बस एक ही है कि अब हम अगला कौन सा राज खोलने वाले हैं।